Namaste and good morning. A warm good morning to everyone present here. A special thanks to Deepika ma'am for taking time of a precious, busy schedule to attend today's program, and each and everyone present here. Uh, it's always a great pleasure to interact with such lively, wonderful, energetic, uh, audience who is always keen on understanding, certain realities of life. And today, this month being, uh, you know, uh, as we are celebrating the Yoga Day, uh, the Brahmakumaris thought of having a series of sessions on yoga. And I would request upfront itself that, the 4 ensuing weeks, which will be highlighting the various postures of yoga, I would request all of you to, consciously be a part of it, attend it, and take benefit out of it. So I'll share my screen. I've made a little presentation. I would request everyone to, if you can switch on your videos, I'll be very happy looking at your beautiful, vibrant faces, because I don't know behind the screen what you're doing. Multitasking of late is not healthy. Maybe we can take a special session on that. It taxes your brain too much, and secondly, it doesn't allow you to develop a very great ability of human beings, and that is the power of attention. We all have one great power, and that power is called as the power of attention. Multitasking reduces the power of attention. Unfortunately, today's times, we are expert in multitasking, and it leads to a lot of distraction, unfortunately. So once again, welcoming all of you. Let me share. I have made a little presentation. Uh, just a minute. And I would request you to, in case you have any doubts, any queries, upfront only ask me. Don't wait till the end of today's session. So we start with a very basic idea about what yoga is all about. So it is said, the main principle of life is to be happy, is to be serene, is to be peaceful, is to be successful, is to be powerful. And if all of them I bring into one particular word called as happiness, one of the main principles of happiness is health, good health. And this program is all about wellness. And the main principle of complete health is yoga. So yoga is very closely related to life. And it is said we cannot buy good health, but it can be a very valuable saving. You would spend a lot of time, energy, money, resources, and on top of it, a lot of agony, pain, uh, trouble, if I become diseased and I have to be hospitalized. So yoga would ensure not only good health, but it can act as a valuable saving also, both in terms of monetary benefits also. Take good care of your body. You know why? Because this is where you live. So generally, I ask people, although we don't have much time today, uh, I ask people, where do you stay? They say Delhi. I said, fine. Where in Delhi? They say Gurgaon. Where in Gurgaon? Sector 27. Where in Sector 27? Ashiana building. Where in Ashiana building? Flat 202. Where in flat 202? Bedroom, living room, kitchen, bathroom. Are where in that 202? Primarily, whatever you experience is what you're experiencing within yourself. So this body is a very beautiful instrument. I need to even take care of it, because this is where I stay the maximum. A little cut in your finger, oh God, what happens? I'm experiencing pain.
maybe at a extreme level, a heart attack, a massive cardiac chest arrest. Oh, what I'm experiencing in severe distress. So we have to take yoga. I want to, shed off a lot of myths about yoga. So I call yoga as a science of well-being. And what yoga is not, it's not a cult, it's neither a religion, it's not a cure all. कई लोग कहते हैं गिरीश सर योगा करने से पेट कम होगा क्या, झुर्रियां कम हो जाएंगी क्या, सिर के बाल आ जाएंगे क्या, यंग दिखेंगे क्या. I mean, please don't do it as a you know a system wherein I'm trying to beautify myself. It's neither a complete physical exercise, it's something more and beyond exercises. It's not an escape route कि मैंने सारा दिन कुछ किया तो it will compensate diabetes control में रहेगा. It's not some mumbo jumbo magic or karmic account would be settled just because you people do just to earn money also. Yoga is bringing kindness in the heart and awareness in life. So if calmness, kindness, awareness, and fitness, all four dimensions is there in my life, then I can call myself as a yogi. I can call that, yes, I am practicing yoga in the true sense. And if I need to tell you something at the psychological level, it teaches us to correct those things that cannot be tolerated and tolerate those things which cannot be corrected. So yoga also helps me to establish a lot of serenity, a lot of humility. That at the same time, I'll get a lot of power with being very humble to correct those things which can be corrected and cannot be tolerated, which cannot be compromised. And at the same time, to tolerate those things which I have absolutely no control of. So it is something more beyond the body also. This is very important. I like this particular slide. Yoga is not about the shape of the body. A lot of people practice yoga because they want to be physically appealing, physically fit. But it is something more beyond that. But it is the shape of your life. अब जब हम जीवन के बारे में बात करते हैं तो उसमें इमोशंस भी आ जाते हैं, फीलिंग्स भी आ जाते हैं, थॉट्स भी आ जाते हैं, भविष्य भी आ जाता है, पास्ट भी आ जाता है, वर्तमान भी आ जाता है. इन सब चीजों का उधेड़ बुन में मानव जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है. सो इफ आई टेल दैट योगा बिकम्स एंटीडोट to make life more peaceful and happy, very true. Yoga is not something to be performed. कई लोग कहते हैं कितना घंटे योगा प्रैक्टिस करते हो, कब करते हो. सुबह सुबह हमने काफी लोगों को देखा है योगा मैट लेकर के ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहनकर फिर योगा करने जाते हैं. I think we have to transcend beyond that. It's not something that has to be performed. It is to be lived. It is, as I said, it is calmness, it is kindness, it is, humility. So can I live a yogic life? Yoga should happen beyond the mat. And this is where, another dimension of yoga is coming into picture, what I started with, which is called as attention. Anything you do with attention to how you feel happy, feel peaceful, feel confident, no stress, no anxiety, no anger, is doing yoga. जो भी हम कर रहे हैं सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक, am I paying attention to what I'm feeling? If I'm feeling something negative, am I able to channelize it to something positive? Yoga means body and soul. It has to go beyond the body. Present moment. The past is so where I live moment. So yoga would try to bring. So it is said if you बहुत important है कर देते हैं and so definitely yes, you should do yogasana. I would not ask this question, but if I tell
about myself, yes, today morning I did yogasana for almost around 35 minutes. But I don't call myself as a, yogasan expert. Yes, I have certain challenges physical level. I do practice yogasana because it will enhance the आपके बॉडी को स्ट्रेंथ, आपके बॉडी को क्या कहते हैं, बहुत अच्छी रीति से वो उसको स्ट्रेचिंग बॉडी को करता है. इफ यू लव योर ब्रेथ, डू प्राणायाम. और कभी कभी हमारे ब्रेथ को भी लोग लाइफ के साथ, प्राण चला गया माना आपका ब्रेथ चला गया मतलब गया, जीवन ही चला गया. जितना हम परेशान होते हैं उतनी हमारी सांसें फास्ट हो जाती है. तो प्राणायाम भी करना बहुत जरूरी है. आपके शरीर में हीट है, आप चंद्र वेधन प्राणायाम करिए. आपके शरीर, आपको ठंड लग रही है, आप सूर्य वेधन प्राणायाम करिए. तो प्राणों को भी, आपके मन को भी और प्राणों का भी, श्वासों का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है. तो उसके लिए भी प्राणायाम करना चाहिए. वापस मैं नहीं पूछूंगा आप लोग प्राणायाम करते ही नहीं करते. यस, मैंने 15 मिनट प्राणायाम प्रैक्टिस किया, मैंने प्रॉपर उसका कोर्स किया. सो इट हेल्प्स, आपके नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है. बहुत सारे ब्यूटीफुल, भारतीय संस्कृति में इतने अच्छे अच्छे हमारे पास टूल्स हैं, बट शायद हम लोगों के पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए. एंड इफ यू लव योर सोल, इफ यू लव योर स्पिरिट, इफ यू लव योर आत्मा, प्रैक्टिस मेडिटेशन. अब ये मेडिटेशन शब्द भी बहुत कंफ्यूजिंग है. योगा, मेडिटेशन, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. लेट मी सी इफ आई गेट टाइम, आई विल शेयर इट विद यू. एंड इफ यू लव गॉड, द सुप्रीम, द क्रिएटर, टू सरेंडर योरसेल्फ. जो भी चिंता है, परेशानी है, उसको उसके ऊपर अर्पण कर दो. आप सोच करके कुछ ठीक होना, यस, यू शुड प्लान, यू शुड ऑर्गेनाइज, यू शुड थिंक अबाउट इट, बट चिंता करना, परेशान होना. सो योगा मेडिटेशन का एक और ऑब्जेक्टिव ये है, to surrender ourselves to some supreme, that one force. Now the question is, what is meditation? The discipline of looking inward is meditation. अब बाहर को बहुत कुछ देखते हैं, फ्यूचर को देखते हैं, पास्ट को देखते हैं, लेकिन भीतर की ओर हम नहीं जानते. खुद के विचार, खुद के भावनाएं, खुद के इमोशंस को हम नहीं सोचते हैं. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिलग्रिमेज विद इन. हम दर्शन करने जाते हैं, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, लेकिन अंदर भी एक बहुत सुंदर मूर्ति है, अंदर भी एक बहुत सुंदर पर्सनैलिटी है, उसका हम दर्शन नहीं करते. खुद के बारे में हमारा अपना स्वमान, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम भी बहुत अच्छा नहीं है. मेडिटेशन इज इंटरनलाइजिंग of our consciousness, is to look within very beautifully. And one of the key elements to be a real practitioner of meditation and experience meditation is detachment. And the problem with human beings is we are not able to detach. 5 minutes, we will do a few exercises. Meditation is an effortless effort which causes us to flow towards that which we realize without conflict. कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. 5 minutes, कैन आई डू एन एफर्टलेस एफर्ट टू एक्सपीरियंस द इनर कॉन्शियसनेस. एक अंदर बहुत सुंदर एक पर्सनालिटी बैठा हुआ है, ओरिजिनली बहुत सुंदर है, बहुत पीसफुल है, और उस पीसफुल पर्सनालिटी को एफर्टलेसली कैन आई एक्सपीरियंस इट. दैट्स मेडिटेशन. कई लोग मेडिटेशन को स्टिलनेस के साथ, कि कुछ नहीं करना है क्या. स्टिलनेस इज नॉट कीपिंग क्वाइट. It means the cause within the self by which the inward life is rendered discordant. अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल है, पहले उससे आप डिटैच हो जाइए. आप उसका सोच करके कुछ नहीं हो सकता है. So detachment or stillness is one of the prerequisite criteria to experience and become a wonderful meditation. Now asana, yoga and meditation, what's the correlation between all these things? योगा जो शब्द है, युज एक संस्कृत शब्द से बना हुआ है. Etymologically, now this is a study of words. Etymology means, जैसे बायोलॉजी होता है, जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है, वैसे etymology means ये एक साइंस है which studies the history and the genesis of words. So if etymologically, if you look at the word yoga, it is कहते हैं it is connected to a word in English called as yoke. And yoga means कम्युनियन, यूनियन, जुड़ना. और आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना योगा, तो आपको यही वाला डेफिनेशन मिलेगा. इट इज द यूनियन ऑफ द डिवाइन सेल्फ
विद द इनफाइनाइट सेल्फ। मैं अंदर बहुत डिवाइन हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत शुद्ध हूँ, और उस परम सत्य के साथ, उसके साथ कनेक्ट करना ही योग का यथार्थ अर्थ है। हम सब योगी हैं एक प्रकार से। आज सुबह मैंने उठा, मेरा मोबाइल ही नहीं दिख रहा था, 5 मिनट मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है। ना नहाना धोना ना कुछ नहीं, सिर्फ मोबाइल चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना है। 5 मिनट के लिए गिरीश वॉज इन योग विद द मोबाइल। मनुष्य का मनुष्य के साथ योग होता है, वस्तुओं के साथ योग होता है, भाग्य के साथ योग होता है, परमात्मा के साथ योग होना चाहिए। पीपल कंफ्यूज योगा विथ हठ योगा, दैट इज asanas, a system of bodily postures. Yoga is primarily a spiritual discipline. जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में कंफ्यूजन हुआ ना, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक योगासन नहीं सिखाया। 18 अध्याय, 700 श्लोक्स, द गीता, द भगवत गीता, नॉट वन सिंगल आसना। माय डियर वंडरफुल ऑडियंस, योगासन करना चाहिए शरीर के स्वास्थ्य के लिए, बट योगा जो शब्द है वो इज मोर बियॉन्ड, मोर प्रोफाउंड। Not that there is anything wrong with practicing hatha yoga. आप इसको गलत मत समझना। The body is a part of the human existence and must be kept fit so it doesn't obstruct our spiritual effort. However, those who are focused on self-realization do not necessarily have to practice it as much or at all also. आप शारीरिक लेवल पर स्वस्थ हैं, वो बहुत जरूरी है, आपने उसको एस्टैब्लिश कर लिया। अब आप योगा जो सुप्रीम सोर्स के साथ कम्युनियन करना है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। हठ योगा इज द फिजिकल ब्रांच ऑफ राज योगा, वन डायमेंशन ऑफ इट, द ट्रू साइंस ऑफ योगा। राज योगा इज अ सिस्टम ऑफ मेडिटेशन टेक्निक्स that help to harmonize human consciousness with the divine consciousness. Yoga is an art as well as a science. It's a science, मैं आपको दोनों बताऊंगा। It's a science because it offers practical methods for controlling body and mind, thereby making deep meditation possible. It's an art. इसको सीखना पड़ेगा, इसको हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। For unless it is practiced intuitively and sensitively, it will yield only superficial results. आज बहुत ये एक बहुत फैड वर्ड हो चुका है मेडिटेशन योगा। कोई भी पूछता है मेडिटेशन करते हैं, हाँ मैं हर दिन करता हूँ 5 मिनट। गुड दैट यू प्रैक्टिस इट, but it has to be very sensitively and intuitively practiced. So yoga is a way of life. It will touch your emotions, your life, your responses, your behavior, your words, your thought process. बहुत subtle और स्थूल चीजों को भी अगर उसमें divinity आ रही है, then we can call, yes, I lead a yogic life. Meditation is a part of yoga. Yogasan is a part of yoga. So meditation, yoga, ध्यान, ये सब एक शब्द, योगा is a canopy word which deals with mental relaxation and concentration. The English word for meditation is derived from a Latin word called as meditare. It also means to think, to contemplate, to devise, to ponder, to heal yourself. So meditation, yogasan and yoga शब्द, yoga is a parent word. अब मैं आपको वो थोड़ा सा आपको महर्षि पतंजलि योग सूत्र के आधार से आपको बताता हूँ। आप पूरा योग सूत्र पढ़ लीजिए महर्षि पतंजलि का, जहां से ये योगा शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ और हमारे आदरणीय रामदेव महाराज ने इसको बहुत अच्छा घर घर तक पहुंचाया है। यू नो, उसमें योगा शब्द का जो डेफिनेशन है वो ये इस एक शब्द में है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त मीन्स ये माइंड या कॉन्शियसनेस, वृत्ति मीन्स उसमें जो उथल पुथल होता है, फ्लक्चुएशंस होता है, निरोध मीन्स उसको कंट्रोल करना। योगा शब्द, आप पूरा योग महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़ लीजिए, उसमें भी एक आसन शब्द नहीं है। कटी चक्रासन, भुजंग आसन, एक आसन नहीं बताया, एक ही बताया, सुख आसन। ऐसा आसन जिसमें आप बैठो आधा घंटा 1 घंटा तक आपका शरीर आपको किसी भी प्रकार का हलचल ना प्रदान करे। अब प्रश्न ये है कि हमको इतना तकलीफ होता है कि चलो पहले तो आप कटी चक्रासन कर लो, भुजंग आसन कर लो, पीठ को ठीक कर लो, फिर आप हायर डायमेंशन में चले जाना। और उन्होंने क्या कहा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधयो ही अष्ट अंगानी, ये 8 अंग हैं। पहले यम, कोई नहीं बताता है यम प्रैक्टिस करो, नियम प्रैक्टिस करो, पर्सनल ऑब्जर्वेंसेस, यूनिवर्सल मोरालिटी, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, किसी चीज के अपने कर्मेंद्रियों पे नियंत्रण, फिर धारणा,
फिर ध्यान और फिर समाधि। हम तो सीधे योगासन ही करते, एक ही अंग को पकड़ते हैं। सो 8 लिम्स, 5 यमास पता है क्या? एक है अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथफुलनेस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, कॉन्टिनेंस, अपरिग्रह, नॉन कोविडनेस, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए किसी और की चीज में। तो पहला ही स्टेप ये है, धारणा है, ये 5 यम है, 5 नियम, शौच, प्योरिटी, संतोष, कंटेनमेंट, तपस, स्पिरिचुअल ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय, खुद पर अध्ययन करना, और ईश्वर प्राणिधान, सरेंडर टू गॉड। फिर उसके बाद आसन, प्रोस्चर्स हो जाते हैं, प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल होता है, विड्रॉल ऑफ सेंसरी प्लेजर्स है, धारणा है, कंसंट्रेशन है, मेडिटेशन है, और उसके बाद आप ट्रांसेंडिंग फॉर्म ऑफ मेडिटेशन पे आ जाते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया। सॉरी, हाँ, अब मैं आपको साइंटिफिक बात बताता हूँ, मेडिटेशन के क्या फायदा या योगा पर से का क्या फायदा होता है। 4 हॉर्मोन्स है शरीर, वैसे तो बहुत सारे हॉर्मोन्स है, इसको मैं डोज कहता हूँ, DOSE होता है ना, कितना डोज का आप दवाई खा रहे हैं, कितना डोज का आप टॉनिक पी रहे हैं। तो डोज इज डोपामाइन। डोपामाइन इज अ प्लेजर हार्मोन। जब रिवॉर्ड कोई भी प्राप्त होता है ना, तो आपका डोपामाइन सीक्रेशन होता है। ऑक्सीटॉक्सिन, इट्स अ लव हार्मोन। एंडोर्फिन, इट्स अ कामनेस हार्मोन, एंड इट्स अ पेन रिलीविंग हार्मोन आल्सो। आपको दर्द होता है ना, जितना अगर आपका एंडोर्फिन रिलीज होगा, उतना आपका इनबिल्ट एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है अंदर, सेरोटोनिन। इट इज रियली कॉल्ड एज अ हैप्पी हार्मोन, इट्स अ विल पावर हार्मोन। जितना आप मेडिटेशन में करते हैं या इन द ट्रू सेंस योगा को प्रैक्टिस करते हैं, नॉट ओनली योगासन, उतना ज्यादा ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। देयर इज वन हार्मोन कॉल्ड एज कॉर्टिसोल्स, इट इज अ नेगेटिव हार्मोन। वो हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, डाइजेस्टिव इश्यूज, नर्व प्रॉब्लम्स को एनहांस करेगा। आपका कॉर्टिसोल सीक्रेशन कम हो जाएगा जितना हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। ये DHEA करके एक हार्मोन होता है, जो हमारे लॉन्जेविटी मॉलिक्यूल को बढ़ाता है। मैंने ब्रह्मा कुमारीज में आकर देखा, यहाँ जो लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते ना, उनके चेहरे से आपको लगेगा ही नहीं इनकी उम्र इतनी हो गई। हमारे ब्रह्मा कुमारीज में जो भी आप भाई बहनों को देखेंगे ना, आई डोंट नो वेदर यू कैन गेस माई एज, यू नो आई शुडंट से इट, बट आई एम रनिंग 50, ऑलमोस्ट 50, 49 डन। और मैं जब पहली बार ब्रह्मा कुमारीज में माउंट आबू गया था, मैं लोगों को पूछता था, आप क्या क्रीम लगाते हो भाई, इतना चेहरा चमकता है, आपकी आंखें इतनी ब्राइट होती है। अब समझ में आ रहा है, जितना आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे उतना DH। आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट मेडिटेशन प्रैक्टिस कर लीजिए, खर्चा भी नहीं है। देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एज कामनेस हार्मोन, इट्स कॉल्ड एज GABA, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। ये जितना रिलीज होता है उतने आपके शरीर में कामनेस आता है। सो देयर इज अ कोरिलेशन, माइंड, मेडिटेशन एंड आपका शरीर के हॉर्मोन्स। इट इज कॉल्ड एज अ GH हार्मोन, फाउंटेन ऑफ यूथ। आप बहुत यंग लगेंगे, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इसको बनाता है और वो इतना एक्टिव रहता है कि सारा एक एक उम्र के बाद है ना, आपका ये GH कम हो जाता है। लेकिन जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं ना, उनमें काफी हद तक ये GH रिलीज होता रहता है। मेलाटोनिन, इट्स अ स्लीप हार्मोन। आजकल लोगों को नींद ही नहीं आता है, जितना आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे उतना ये रिलीज होता है। चलिए, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, इस पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। योगा का जो मेन आधार है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। इसमें आपका त्राटक योग आ गया, इसमें आपका विपस्सना स्टाइल ऑफ मेडिटेशन आ गया, मंत्र जाप आ गया, ऑल फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन। और फिर कई लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। फाइन, आपको अगर अपना कॉन्सेंट्रेटिव पावर बढ़ाना है तो फिर आपको ऐसे मेडिटेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेकंड इज जिसको हम कहते हैं कंटेम्पलेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। एक कंटेम्पलेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन में आपको अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन आपके टेक्निक्स को बढ़ाना पड़ेगा। और थर्ड है जिसको हम कहते हैं ट्रांसेंडिंग फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, जिसको हम समाधियो कहते हैं। आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करें, आपको लगेगा ही नहीं मैं शरीर में हूँ, आपको लगेगा ही नहीं इस संसार में इतने प्रॉब्लम्स हैं, आपको इतने चैलेंजेस, 5 मिनट जैसे कि आप गहरी नींद में। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसेंडिंग फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। यहाँ पर आप ब्लिस को और रियल पीस को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड you know at least concentrative and contemplative form of meditation.
Concentrative form of meditation is a form of meditation in which we train the mind to focus on one object. मैंने आपको कहा था ना, वो मल्टीटास्किंग, वो मल्टी में बहुत सारी जगह मन डाइवर्ट हो रहा है, और यहाँ पर एक ही चीज पर आपको फोकस करना. In fact, using your mobile phone is also detrimental to a concentrative form of enhancing concentration power. You know why? The moment suppose you're reading a document, या मोबाइल में आप इसको सुन रहे हो, ठीक है, सॉरी आप पढ़ रहे हो, तो जब आप पढ़ते हो, आप किताब से पढ़ो और ये मोबाइल फोन से पढ़िए. किताब से जब हम पढ़ते हैं ना, तो वी आर ओनली, our eyeballs are moving from left to right, left to right, left to right, left to right. It is called as immersive form of reading. Whereas the same book you are reading from a mobile phone, you're reading left to right, at the same time you have to swipe it up. और जैसे ही आपने ऊपर कर दिया, वहां पे टिंग करके नोटिफिकेशन आया. मैं एक शू खरीदना चाहता था, वहां अमेजन में एक व्हाइट कलर का शू का नोटिफिकेशन, वाओ ये मेरे को चाहिए था, आपने उसमें क्लिक कर दिया, आप बुक से हटकर कहीं और चले गए. योर eyeballs are moving up, down, all haywire, 360 degree, and the brain is being taxed more. You're reading the same document, but the brain is spending more energy. So it's not called as immersive reading. So when the mind is only focusing on one object, it is called as concentrative form of meditation. It is cultivating an ability to be with the present in front of us for a specific period of time. 5 मिनट के लिए करिए, 2 मिनट के लिए करिए. I mean, you can do it with a cup of tea also. You and your cup of tea. उस वक्त आपका मोबाइल टिंग कर रहा है, डोंट अटेंड टू इट, डोंट सकम टू दैट टेम्पटेशन. क्या है देखूं, जस्ट मैं और ये चाय का प्याला, 3 मिनट. हम ब्रश करते हैं, ब्रश कर रहे हैं, लेकिन मन क्या 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 सोच रहा है. अब ब्रश कर भी लिया, हमने टंग क्लीन भी कर लिया, मुंह भी धो लिया, शेव भी कर लिया, लेकिन हमारा अटेंशन ही नहीं रहता. So these are little practices. So yoga is a form of life. It's just not 5 minutes आपने कर लिया, खत्म हो गया. Every moment you can do it. It's okay if the mind wanders from time to time, but as we continue to practice, we will be able to focus for a longer period of time. Concentration is cultivated by returning to the object of our awareness when the mind wanders. मन अगर जा रहा है, उसको वापस लेकर आइए. इस जैसे योगासन में एक्सरसाइज करते हैं ना, ऐसे ही ये वाला मसल स्ट्रांग होगा, ऐसे ही मन के मसल्स को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा. Every time we bring the mind back, we are strengthening our ability to concentrate. We will eventually grow able to leave the thought and not hook into them in the first place through repeated practice with concentrative meditation. So करें 1 मिनट के लिए मेडिटेशन. ठीक है, ठीक है. आपको मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें एक पॉइंट है, उसको बस देखते रहें. ठीक है, और देखना आपका मन कहाँ जा रहा है. आप ऑफिस में बैठे हैं, कोई आपका फाइल आ गया, कोई बात कर रहा है, वहां ना जाए, घर में ना जाए, परिवार में ना जाए, पास्ट में ना जाए, फ्यूचर में ना जाए. सो लेट्स स्टार्ट 1 मिनट ऑफ कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन. ठीक है, जस्ट लुक एट दैट पॉइंट ऑफ लाइट एंड ट्राई टू फील व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग. बी अटेंटिव टू वेयर द माइंड इज वॉन्डरिंग. और मन अगर कहीं जाता है तो उसको वापस लेकर आए. Stop, relax, come back. You have to check the quality of the last 1 minute of your concentrative powers. आपको ये देखना था कि मेरा मन कहाँ कहाँ गया, और जहां जहां गया उसका मतलब आप उस चीज के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं. अभी तो हमने सिर्फ 1 मिनट किया है, इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बढ़ा सकते हैं. इसको रिफ्लेक्ट करना है, इसको लिखना है, मेरा मन कहाँ कहाँ गया, क्यों गया मन वहां पर, व्हाट वाज द रीजन देयर.
The second form of meditation, type of meditation, is what we call as contemplative form of meditation. राज योगा meditation जो ब्रह्मा कुमारी सिखाती है, इसमें concentration meditation भी आ जाता है, contemplative form of meditation भी आ जाता है, और transcending form of meditation. It's a राज योगा, राजा है वो, हर प्रकार के योगा के जो बातें हैं इसमें समाहित है. So contemplative form of meditation में दो चीजें बहुत जरूरी है, ये भी हमको अपना ability बढ़ाना है. The first is called as visualization. कॉन्सेंट्रेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन में आपको कुछ विजुअलाइजेशन नहीं करना, बस मन को एक जगह बिठा देना है, वहां से वो जाना नहीं चाहिए, खिसकना नहीं चाहिए. दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एबिलिटी आना चाहिए. विजुअलाइजेशन में यू वुड हैव टू बी एबल टू विजुअलाइज थिंग्स, ये भी हमारा एक एबिलिटी है. सेकेंड कंटेम्पलेटिव फॉर्म ऑफ मेडिटेशन का एक स्किल आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अफर्मेशन. अच्छी अच्छी बातें कल्टिवेट करना, अच्छे मन में अच्छे अच्छे विचार क्रिएट करना, पॉजिटिव विचार करना, वो है अफर्मेशन. विचार क्रिएट करें, उसको देखें और एकाग्रता से इसी में बिठा के रखें. तो कंसंट्रेशन भी आ गया, अफर्मेशन भी हो गया, विजुअलाइजेशन भी आ गया. जितना ज्यादा हम ये करते हैं, इट हैज अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन व्हाट वी कैन अचीव इन लाइफ. Affirmations are sentences aimed to affect the conscious and the subconscious mind. The words comprising the affirmations automatically and involuntarily will bring up the related mental image into the mind, which could inspire, energize, and motivate you. Repeating affirmations and the resultant mental images affect the subconscious mind. यहाँ सबसे important चीज है. अगर subconscious mind में डर है, subconscious mind में insecurity है, आप कितना भी ऊपर से इसको चीजों को हैंडल कर लीजिए, सही समय पर आपका वो फियर बाहर आ जाएगा, गुस्सा बाहर आ जाएगा, इरिटेशन बाहर आ जाएगा, डर बाहर आ जाएगा, हार या कॉन्फिडेंस जो नहीं होगा वो सब बाहर आ जाएगा, which in turn influences the behavior, habits, actions and reactions. So where मुझे पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्सा आ रहा है, मुझे पता है झूठ नहीं बोलना, कहाँ से आ रहा है ये? It is there in the subconscious mind, जिसको हम deep rooted संस्कार कहते हैं.